अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम टू बायोलॉजी बाय देश। और पिछली बार हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। टॉपिक नंबर 16 तक व्हाट इज़ जेनेटिक्स, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। आपने BIF101 का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अगले टॉपिक से स्टार्ट करना है। हमारा स्टार्ट है जनाब लेसन नंबर 17 है सब डिसिप्लिन्स ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पर हम इसका पहले क्विज ले लेते हैं। क्विज के अंदर हमारे पास ये है और असेसमेंट का क्विज। हाँ, हम ये ले लेते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स ऑल्सो कार्ड। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर के लिए, अच्छा, इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल जेनेटिक्स, नन ऑफ दीज सिंपल जेनेटिक्स, क्लासिकल, यस क्लासिकल जेनेटिक्स। उसको कर लेते हैं सेव हो गया, करेक्ट हो गया। थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हम अपनी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। Genetics can be classified into 4 sub-disciplines. Although some of the geneticists and researchers they classify genetics into many sub-disciplines, but most of the geneticists they classify genetics into 4 sub-disciplines. The 4 sub-disciplines of the genetics they are transmission or classical genetics, population genetics, quantitative genetics, as well as molecular genetics. So these are the 4 sub-disciplines of the genetics. But those geneticists that classify genetics into many sub-disciplines, these are the major sub-disciplines of the genetics. Molecular genetics that deals with the genetics at molecular level, cytogenetics where we study genetics, अपना हाथ तो ऊपर नहीं रख सकते, the chromosomes and the bending pattern of the chromosomes. If we study bending pattern of the chromosomes, then this branch of genetics is called as cytogenetics. While in case of Mendelian genetics, one study the genetics about all those laws that were developed by the Gregor Mendel, the laws of heredity that comes under the heading of Mendelian genetics. Plant and animal genetics. If we study the genetics of the plants or the genetics of the animals, then this subcategory of the genetics is called as plant and animal genetics. While population genetics, if we study the genetics of a specific population or the people which are present in a particular area, then this type of the genetics is called as population genetics. And if we study the genetics of the microbes, like the genetics of the bacteria, genetics of the viruses, then this category of the genetics is called as microbial genetics. So these are all subdivisions or subcategories of the genetics. If we see the developments of the genetics, and historically transmission genetics was developed first, which is also called as Mendelian genetics. Later on, population genetics was developed, and then quantitative genetics, and the last molecular genetics was developed historically. If we see that what is transmission or classical genetics, transmission or classical genetics deals with the movement of genes, chromosomes or traits from parents into the offsprings. This type of the genetics also deals with genetic recombinations. In case of population genetics, we study certain traits in a specific population. If certain traits are studied in a specific population, either that is determined by a single gene
or that is determined by more than one gene. This type of the genetics is called as population genetics. Quantitative genetics. Quantitative genetics deals with those characters which are determined by more than one genes, mean more than one gene simultaneously determined for certain traits. This kind of genetics is called as quantitative genetics, like the skin color, like the height of the humans, as well as eye color of the humans. There are many genes which control eye color of the humans, height of the humans, as well as skin color of the humans. So this type of the genetics is quantitative genetics. Fourth and the last type of the genetics, that is molecular genetics. If we study genetics at the level of molecule, at the level of DNA, RNA, or we identify certain mutations or the sequence of the DNA, then this type of the genetics is called as molecular genetics. So these are four major subdisciplines of the genetics. Some geneticists, they classify genetics into four, but there are many geneticists, they classify genetics into more than four subdisciplines. So friends, हमारी वीडियो हो गया कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. हमारे पास आ गई हमारी रीडिंग. हम कर लेते हैं PPTs को करें डाउनलोड. ठीक है, तो यहाँ पर है सब डिसिप्लिन्स. देयर आर 4 सब डिसिप्लिन्स ऑफ जेनेटिक्स: ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आ गया है यहाँ पर डेवलपमेंट इन जेनेटिक्स. हिस्टोरिकली ट्रांसमिशन जेनेटिक्स डेवलप फर्स्ट बाय, फॉलोड बाय पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड फाइनली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. सही. ट्रांसमिशन और क्लासिकल जेनेटिक्स डील विद मूवमेंट ऑफ जीन्स एंड genetic trait from parents to offsprings and deals with genetic recombination. Population genetics study traits in a group of population, study heredity in groups for traits determined by one or few genes. ठीक है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स स्टडीज ग्रुप हेरिडिटरी for traits determined by many genes simultaneously. ठीक है, स्किन कलर, हाइट एंड आई कलर. ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स. ओके, अब हम चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ. हमारे पास PPTs आ गई हैं और ये खुल जाएंगी. यस, खुल गई हैं ये. इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स में हमारे पास सब डिसिप्लिन्स ऑफ जेनेटिक्स आ गया. उसके अंदर 4 सब डिसिप्लिन्स ऑफ जेनेटिक्स: ट्रांसमिशन, क्लासिकल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. ठीक है, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स और ये जेनेटिक्स. इसके अंदर इससे भी ज़्यादा टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको. ठीक है, डेवलपमेंट्स इन जेनेटिक्स. हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन जेनेटिक्स डेवलप फर्स्ट, फॉलोड बाय पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड फाइनली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. ठीक है, आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ सही आ रही होगी. सो चलते हैं आगे. यहाँ पर है ट्रांसमिशन और क्लासिकल जेनेटिक्स डील्स विद मूवमेंट ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, मेंडल्स लॉस. ठीक है, उसके बाद में है मेंडल्स लॉस डील्स विद जेनेटिक कॉम्बिनेशंस. ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी ट्रेट्स in a group of population, studies heredity in groups for traits determined by one or few genes. ठीक है, quantitative genetics studies groups hereditary for traits determined by many genes simultaneously, skin color, height, eye color etc. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास molecular genetic deals with the molecular structure of functions of genes, just like कि मॉलिक्यूल जीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं. तो वो DNA होता है उनके अंदर, ये सब स्टडी करना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आ जाता है.
उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने पोस्ट असेसमेंट में। पोस्ट असेसमेंट में यहाँ पर स्टार्ट क्विज कर लेते हैं। तो यहाँ पर डैश डील्स विद जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। डैश डील्स विद जेनेटिक रिकम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। यहाँ पर होगा ट्रांसमिशन जेनेटिक्स मेरे ख्याल में, तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ठीक है। इसको कर लेते हैं। सेव डैश वाज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन ग्रुप्स फॉर ट्रेड्स डिटरमिन्ड बाय अ फ्यू जीन्स, पॉपुलेशन, मॉलिक्यूलर, क्वांटिटेटिव। ये ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर अच्छा, ये ट्रांसमिशन वाला नहीं था, कोई और था, चलो कोई बात नहीं। हमसे कर लेते हैं क्रॉस। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो ये है लेसन नंबर 18, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में टेक क्विज कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। टेक क्विज कर लेते हैं। डैशन वाज द स्टडी ऑफ एडिटिंग ग्रुप्स फॉर ट्रेड्स डिटरमिन्ड बाय फ्यू जीन्स। ये वही वाला है, ट्रांसमिशन नहीं है, मॉलिक्यूलर, आई थिंक पॉपुलेशन, ये यस पॉपुलेशन वाला है, ये बिल्कुल दुरुस्त। अब चलते अपनी वीडियो को आगे देख लेते हैं पूरा। Before understanding the laws of heredity, there are some genetic terminologies. It is necessary to understand those genetic terminologies for the better understanding about the laws which were formulated by the Gregor Mendel in mid of 19th century. Character. What is the meaning of character? Heritable feature is called as character, like the skin color, color of the eyes, they will be called as character. While what is the meaning of trait? Trait is variant of a character. If we take the example of human eye color, like some of the persons they have black eyes, some brown, some gray and some blue. So this variation is called as traits. While true breed, if all the offsprings are produced of same variety, like the tall plants, they will produce tall offsprings, and short plants, they will produce short plants. Those varieties will be called as true breeds. Gregor Mendel labeled different generations by parental generation, F1 generation and F2 generation. What is the meaning of parental generation, F1 generation and F2 generation? If we take the example of the humans, grandparents, they will be called as parental generation. Their daughter and sons, they will be called as F1 generation, while their granddaughter and grandsons, they will be called as F2 generation. What is the meaning of pure cross and hybrid cross? The cross between two true breeding plants is called as pure cross, while a cross between two hybrid plants, that is called as between the plants which were produced as a result of pure cross. If we cross those plants, that cross is called as hybrid cross. What is the meaning of genotype and phenotype? Genotype is the genetic makeup of an organism, like the number of chromosomes, the number of genes, or the sequence of that genes in a particular organism is the genetic makeup of that organism. While the
physical appearance of that individual, like the height of an individual, the skin color of an individual, or the color of the eyes. These are the physical appearance, and these are called as a phenotype of that individual. If we take here the example of genotype and phenotype, if we take a phenotype, there are three purple color flowers and one white color flower. These are the three purple color flower and one is white color flower. So these are phenotypes, purple color and white color. These are phenotype. While if we say that purple color have two types of genotype, one is homozygous. These are homozygous, capital P and capital P, while this plant that is heterozygous, one is capital P and one is small p. So purple color has two type of genotypes, one that is homozygous and the second one that is heterozygous. What is the meaning of dominant and recessive? During a cross, when one trait expresses itself over the other, that trait is called as dominant, while that trait which is masked by the other trait is called as recessive trait. If we take the example of dominant and recessive, like a round is dominant over a wrinkle. So round is a dominant trait, while wrinkle seed, they are the recessive trait. सो फ्रेंड फाइनली हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. यहाँ पर चल लेते हैं रीडिंग की तरफ. रीडिंग में हम पीपीटी पूरा डाउनलोड कर लेते हैं. उसके साथ वाला काम हमारा है हैंडआउट्स को रीड करना. ठीक है. कॉमन जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज. ठीक है. व्हाट इज कैरेक्टर, हेरिटेबल फीचर, स्किन कलर, हाइट एटसेट्रा. ठीक है. उसके बाद फिर व्हाट इज ट्रेट, वेरिएंट फ्रॉम अ वेरिएंट फॉर अ कैरेक्टर, ब्राउन, ब्लैक, वाइट एटसेट्रा. उसके बाद व्हाट इज ट्रू ब्रीड, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सेम वैरायटी, इसको कहते हैं ट्रू ब्रीड. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट जनरेशन ऑफ अ क्रॉस कैन बी पी जनरेशंस, पेरेंट्स F1 generation, first filial generations, F2 generation, second filial generations. Pure cross, a cross between a true breed plant or animal with another true breed plant or animal is called a pure cross. True breeding, X true breeding, WWX. अच्छा ट्रू ब्रीडिंग जो है वो क्रॉस करता है, क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग, और WW क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू. ठीक है. उसके बाद ये हाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन क्रॉस विद F1 जनरेशन, और ये भी उसके वो हो गए एलीज. ठीक है. कैपिटल W स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस कैपिटल W स्मॉल डब्ल्यू. ठीक है. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, व्हाइल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप. ठीक है. डोमिनेंट एंड रिसेसिव, व्हेन one characteristic expresses itself over the other, that is round over wrinkled, was dominant in Georg Mendel experiments, with while the trait that does not show through in the first generation is called as recessive trait, और उसे कहते हैं wrinkle, क्योंकि वो सप्रेस हो जाती है उससे, कौन से वाली से, राउंड ट्रेट से. ठीक है. उसके बाद हम चल लेते हैं आगे हमारे पास आ गया है बोनस पॉइंट हमारा है पीपीटीज. उसके बाद हमारे पास टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज. ठीक है. जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, कैरेक्टर, हेरिटेबल फीचर, स्किन कलर, हाइट एटसेट्रा, ट्रेट, वेरिएंट फॉर अ कैरेक्टर, दैट इज ब्राउन, ब्लैक, वाइट एटसेट्रा, ट्रू ब्रीड, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सेम वैरायटी. उसके बाद डिफरेंट जनरेशन ऑफ अ क्रॉस, पी जनरेशन, पेरेंट्स, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन. प्योर क्रॉस एंड हाइब्रिड क्रॉस. प्योर क्रॉस में क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग का जो होता है वो एक पार्टनर ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस करता है दूसरे ट्रू ब्रीडिंग पार्टनर के साथ. ठीक है. और उनके एरियल कैपिटल W स्मॉल डब्ल्यू
भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, सही है। हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन क्रॉस करती है F1 जनरेशन के साथ, सही हो गया। उसके बाद में हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप जो होती है वो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप, ठीक है। जेनेटाइप में देखा होमोजाइगस हो गया और हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, ठीक है, 1:2:1, ठीक है। उसके बाद पर्पल, फिनोटाइप में पर्पल हो गया, फिर फिर वाइट 3:1, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट जो है वो विच वन कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओवर द अदर, जैसे कि राउंड ओवर रिंकल्ड, ठीक है। उसके बाद रिसेसिव में हो गया द ट्रेट दैट डज नॉट शो थ्रू आउट इन द फर्स्ट जनरेशन दैट इज़ रिंकल्ड, ठीक है, वो शो नहीं हुई थी ना, राउंड शो हुई थी फर्स्ट जनरेशन में, सही है। उसके बाद फिर मेंडल ने क्रॉस करा था तो आगे से भी अलग अलग ट्रेड्स शो हुई थी। आप लोगों को याद होगा हमने ये पढ़ा था, ये वाला पूरे का पूरे उसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, 2 से 3 2 लॉस थे उसके, 2 लॉस, ठीक है। तो उनमें आए थे ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। तो हम चलते हैं इन जेनेटिक्स F2 इज कॉल्ड सेकेंड हेरिडिटरी ट्रेट, नन ऑफ द सिंपल फेलियर सेकेंड फेलियर जनरेशन, ठीक है। हिस्टोरिकली ट्रांसमिशन जेनेटिक्स डेवलप फर्स्ट और फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और फाइनली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और ये हो गया ट्रू, ठीक है। चल देते हैं आगे। ये है जनाब इनका एक, अच्छा ये फॉल्स था, ओके। इसको कहते हैं क्रॉस फेमस वाली बात नहीं है। अब चला जी, अब हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा, मुझे तो बेहतर तौर पर समझ आया, काफ़ी कुछ समझ आ गया, तो आप लोगों को भी आई होप समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।